Should we start? हाँ भैया करो करो। Okay. Okay, guys. Or should we wait just 1 or 2 minutes so other people can also join? Yogesh? Sorry, usual. हाँ भैया Should we wait 1 or 2 minutes or we should start? Which one will be better? रुक जाते भैया 1 मिनट और फिर। Okay, okay, okay. Those people who are watching on the YouTube, they can also ask any question in the chat box, so we can take, and on the Google Meet also. Anytime if you have any doubt, just open your mic and you can ask question to me. Who is unmute? Please mute yourself. And Sasan, focus on the slide so the other people can also see on the YouTube. Okay, so we are going to start. So, hello everyone. Myself Anand Kumar, BTech third year student in IIT BHILAI. So, this online summer blockchain bootcamp are organized by IIT BHILAI, a BIB Society blockchain at IIT BHILAI. So, this is the 3 month online boot camp where we already covered the blockchain with Pratik S. Patel from the Polygon Labs. And this is the season 2. So, we are going to cover Bitcoin from basic to advanced level, everything about Bitcoin. And in the next session, we will have expert in the Bitcoin Foundation. So, this session is really important to discuss more in advance in next session. So definitely we will have expert in the next session, and after the Bitcoin, we will cover the Ethereum blockchain, the smart contract, and the Web3 security, and also some layer 2 public blockchain. So yeah, so everything is okay, Ujjwal? यस भैया। Okay, okay, okay. So yeah, so you can see here, I already wrote Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system
let's break down the meaning of each word in this line. So, Bitcoin. So, anyone can say what is Bitcoin? Please raise your hand. Okay, no problem. So, like everyone thought Bitcoin is a cryptocurrency. So, like we can trade or we can buy or store Bitcoin on our wallet. But here is the twist. So, Bitcoin is not a cryptocurrency. This is a protocol. The Bitcoin refer to the set of some rule and regulation to run the blockchain of Bitcoin smoothly. So it's a cryptographically secure digital ledger that involves decentralized digital currency called BTC. The BTC is a native currency of Bitcoin. So Bitcoin is a protocol and BTC is the cryptocurrency. Got it? And the meaning of peer to peer. So it refers to decentralized network architecture. Means you can directly involve in Bitcoin. So you don't need any third party to involve in Bitcoin. You can buy or transfer your BTC directly to each other. So there is no third party involvement like our bank or our governance. And what is the meaning of electronic? So it refers to the digital nature of Bitcoin. So we already know. So there is no physical significance of Bitcoin. It is completely electronic. So it is pure digital currency that exists only in electronic form. It can be stored or transferred electronically by computer. So there is wallet for Bitcoin. And the most important point, so unlike our INR, so we can store our or INR in our bank or in our account. So unlike you cannot store your Bitcoin in your wallet. So Bitcoin is a like digital ledger that update in the blockchain, but you can access your Bitcoin by your private key. If you don't have any private key, means you lost your entire Bitcoin. What is the meaning of cash? So the general system cash refer to the form of currency that anyone can use to medium of exchange to buy some goods or services. So here is the also M function as a digital equivalent of physical cash. The system refer to the overall structure of the design of Bitcoin protocol. It involves rules, protocol, consensus mechanism, the security of blockchain. Okay, the agenda of today's topic, we will understand the concept of Bitcoin, why they come into beginnings, how do they work, the technical part of Bitcoin, some advantage and disadvantage of Bitcoin, why everybody seems to be much interested in Bitcoin, and how the new BTC is mined. So we already know the BTC is 21 million. It's limited in the network, and already 18 million is in market. To mine uh, 2 million, it will take some 150 years. You will see everything. So yeah, if any have any question till now, can raise your hand or ask any question or write in the chat box. Any question, guys? Is everyone fine with English or you can understand Hindi as well? Ujjwal, हाँ भैया लाइक रविंद्र भैया ने चैट बॉक्स में पूछा है व्हाट इज माइनिंग. what is the mining? Okay, I will explain later in details. So mining is just a reward for the miners. I will explain everything. Let's go ahead with some topics. So what is Bitcoin? So the aims of Bitcoin. So we don't need any third party like our banks. So
the current situation, like we there are some banks and we can transfer money from bank to bank, not person to person. And the bank will know all the details of customer or consumer. If anything happen, the bank can track your all the transaction and the change your transaction as well, or seize your transaction or amount. So the second point, no real name. So in the Bitcoin protocol, uh, you have your public address, not your name. So no one can track your name by your public address. And the third point is transparent consensus network. Means you can see all transactions of any users, but you cannot tamper their transaction. You also go in back to time in back, and you can see all the transactions from Genesis block to current block. And the complete digital money. Our INR or any governance currency is not a complete digital money, but Bitcoin is a complete digital money. Means in INR you have the physical form of the INR, but in the Bitcoin there is completely digital. You cannot like touch or you cannot feel the Bitcoin. The decentralized peer-to-peer payment. Many times whenever you try to use like phone pay or Google Pay, there is some warning like SBI server error or something, and you cannot trigger your transaction because the centralized authority. But in this case, the Bitcoin blockchain is completely decentralized and peer-to-peer. In the entire blockchain, there are multiple types of blockchain, but among these, the Bitcoin is uh, the like more decentralized rather than the other blockchain. And last point is no central authority or middleman. So we all know it's a peer-to-peer, so we don't need any third party. So you can transfer your BTC to person. We will see how we can transfer our BTC. Yeah. Let's go ahead, and the goal behind the Bitcoin. So why we need Bitcoin technology? First, direct payment without any third party, I already say. So before this, we just go to bank and we can transfer our money bank to bank, not person to person. But in this case, you can transfer your BTC direct person to person. Decentralized node means if there are multiple server, if any server will shut down, the other server will allow you to payment. The peer-to-peer payment system is peer-to-peer means person to person or node to node. Solve double spending problems that a coin spent in more than one transaction. We will explain later. Ujjwal, remind me. So I will explain what is exactly double spending. Double spending means you try to spend your money in two twice. So you can send some amount to your friend or also some other friend at the same time. But Bitcoin will prevent you to do this. And it's a cryptographically secure. Means till now अभी तक Bitcoin पे कोई attack नहीं किया है. Means it's a more secure, and nothing is more secure than Bitcoin because of their consensus mechanism proof of work. Yeah. So the term you should know to understand Bitcoin protocol. First is SHA-256 hash function. So we will go one by one. What is the hash rate? What is the block? Private key, public key, digital signature, blockchain, mining, wallet, and what is halving. So let's go to like try to understand what is SHA-256 hash function. Okay. So yeah. So SHA-256 is a cryptographic. So you have a deterministic output value of a particular input, and this is like this. Uh, so every unique input have unique output. Means there is no two output exist that have same output. Let's take a name Bitcoin. So for the Bitcoin, you have this hexa value. This is a 256 bit. So this is a hexa value. If you change little bit, uh, just only one doubt, you can see the entire hash will change. Yeah, just only for the dot. If you remove dot, you will get again your previous value. Means it's a not a random value, it's a deterministic value. There is very complicated math behind this, but overall you can know what is the SHA-256. SHA-256 means output is 256 bit, or this is called the hash function. Okay, and let's go to the block.
So before this, we are going to understand what is exactly blockchain. Yeah. So not only Bitcoin, कोई भी blockchain में like there is some block number, okay, and this will append in a linear fashion, and this is the nonce. Uh, nonce is just a number, okay, and data. So the miner will store all the transaction in this box. So we can also store like Alice to Bob 10 BTC. Okay, so you can see the entire blocks are color in red means this is not a like mined. So you can see here is the previous hash. The previous means the hash of previous block. So the for the first block, the first block, this is called Genesis block. There is no previous block, so it's a zero, and this is the hash of current block. Let me zoom it again. The hash of current block. So you can see the entire block are in red color means something is tampered with this block. So like you can see the this is the current block hash and this is the previous. So in the second block, it will take the hash of the previous block, और ये हमेशा ऐसे जाता रहेगा like next block में previous block का hash होगा like this too, hash of this block, again next block में previous block का hash होगा. Okay, so this is the called a blockchain. तो blockchain ऐसा होता है कि it's connected with a chain. A chain is just a hash of previous block. तो अगर इसमें हम किसी एक भी ब्लॉक में अगर हम कुछ भी टैम्पर करता है कोई अटैकर, तो एवरी नोड can know yeah something is happening in previous block. Let's remove this data and you see now the color is green. So let's start something we can edit here. So you can see only two blocks are in red color means the before this block everything is secure and like remains constant, but onward this block, इस block के बाद जो एक भी डेटा चेंज होने के बाद सारा ब्लॉक रेड हो रहा था मीन्स द माइनर कैन नो something is tampered from this block. That's why the blockchain is really secure. So just go to what is inside the one block. So let's say this is the block one and this is the nonce and this is here some data like you can like Alice to Bob, you can transfer someone the Alice transfer to someone BTC 10 BTC to Bob. So the block contain the transaction of all users. Okay, not all users, there is some limit of 1 MB, and this is the hash. So for every block, the miner need to calculate hash, and this is called mining. So you cannot like this is the hash of this data, but you know the color of block is red means it's not mined. कोई भी ब्लॉक को माइन करने के लिए एक सर्टेन रूल्स होते हैं like you need some zero leading zero like 4 0 or 5 zeros. So this is called a difficulty of the block. So let's start with changing some data. तो ये नॉन्स है तो माइनर्स को नॉन्स चेंज कर करके ये हैश वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है जिसके लीडिंग में 4 0 या फिर 5 0 हो. तो ये ब्रूट फोर्स होता है. ये देर इज नो एनी फॉर्मूला और इक्वेशन टू फाइंड दिस नॉन्स. You need to like you need to like take input from 1 to 2 to the power 256. So you can start with 1 like 1 you didn't find hash, you need to take like you again take 2, you didn't find hash to for the leading 4 0. So this is the like mining button, not this is just for demo. तो बट एक्चुअल में क्या होता है ये हमें ब्रूट फोर्स करना पड़ता है टू गेट सम हैश बिलो द सर्टेन पॉइंट. तो लेट्स स्टार्ट माइनिंग. सो ये बैकएंड में ब्रूट फोर्स कर रहा है 1 2 3 4 डेटा रख के. सो नाउ यू गेट द हैश विद लीडिंग 4 0. दिस इज कॉल्ड माइनिंग एंड योर नॉन्स इज 18787 मीन्स अभी तक हमने 1 2 3 4 टिल 18787 तक अभी हमने ट्राई किया and we can get the our perspective hash value with this nonce. This is called mining. Understand?
Is there any question till now? If you have any doubt, you can ask directly. Any question as well? No, yeah, let's just continue. Okay, okay. So till here, everyone got it or not? Okay, if you have any doubt in letter, you can just ask me. So I already finished the hash. What is the hash, and how it has like used in the mine the block, and I already discussed what is the blockchain, right? What is the next topic? Okay, just go. So what is the distributed system? So yeah, so distributed blockchain means there are a lot of nodes. Uh, that's why we call decentralized node. So like ये एक peer one है. The like every node has an entire data of blockchain. So peer one के पास सारे blocks के data हैं, and again uh, peers टू के बाद भी सारे डेटा है ब्लॉक्स के विथ सेम डेटा. तो सबके पास सेम ब्लॉक्स हैं. ओके, पीएस सी के पास भी. तो अगर कोई पीएस वन में आके कुछ भी डेटा टैम्पर करता है, लाइक आई जस्ट राइट टी, द इंटायर ब्लॉक आर लाइक अनवेरीफाइड. सो ये ऐसा क्या हुआ कि जो नेक्स्ट जो सर्वर है मीन्स जो नोड है, सो एवरी वन लाइक कनेक्टेड विद ऑल द नोड्स, और वो सभी पता कर लेते हैं लाइक किसके नोड पे टैम्पर हुआ है. तो अगर अगर कोई एक नोड पे भी अटैक होता है तो ये सारे डेटा है बैकअप के लिए. तो दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड नोड. मीन्स देर इज नो वन सर्वर, देर इज अ मल्टीपल सर्वर टू बैकअप योर डेटा. तो दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटेड टोक लेजर. एंड ओके, सो अब देखते हैं एग्जैक्टली लाइक let's try to say exactly how the transaction is stored in the Bitcoin blocks. Like every blockchain पे different data store होते हैं, but I am focusing on only the block of Bitcoin. So let's say this is the block one, and this is the nonce value. Okay, and here is some transaction stored by miners. So miners का work होता है like pick up the transaction from the mempool and store here. So like $25 from DAR to BI एंड $4 फ्रॉम EL टू ZA. तो ये कुछ है लाइक जो ऑलरेडी माइंड है ये ब्लॉक. द ब्लॉक माइंड होने का मतलब कि जो सर्टेन ब्लॉक का जो हैश है विद लाइक सर्टेन लीडिंग जीरो होने चाहिए. ये डिफ़िकल्टी बताती कि किस ब्लॉक की डिफ़िकल्टी कितनी है. लाइक अगर लीडिंग जीरो ज़्यादा बढ़ जाते मीन्स इट्स मोर डिफ़िकल्ट टू माइंड. सो लेट्स चेंज सम डेटा फ्रॉम इन द ब्लॉक टू. लाइक नॉट 97. अगर कोई अटैकर आता है और वो जस्ट चेंज करता है 97 टू 96, you can see after the block 2 the entire block are in red color, means the all peers know. So something is tampered in peer B in block 2. So you know the hash is the this block is appended in the hash in the next block. So let's start again mining. So mining means you need to find nonce value that the output of the hash of this block with leading some certain zero. This is the mining. Okay, so this is the tokens. Okay, तो अभी तक I already covered the SHA-256. Hash rate means what is the limitation of calculation hash per second.
मीन्स अभी जो हैश रेट चल रहा है वो ट्रिलियन हैश पर सेकेंड में चल रहा है। मीन्स यू नीड टू, if you want to mine any block of Bitcoin, you have such powerful computer that calculate the trillion hash per second. I already discussed the block and the blockchain and the distributed ledger. Okay, so till here, any have any doubt in the blockchain भैया SH256 hash rate? Yes. लाइक लाइक अगर कोई ब्लॉक टेम्पर किया गया तो ये तो पता चलेगा कि उसमें टेम्परिंग हुआ है, बट किसने किया है ये कैसे पता चलेगा? हाँ, बिकॉज अभी बस ये डेमो के लिए है, बट व्हेन आई विल शो यू द रियल डेटा ऑफ बिटकॉइन ब्लॉकचेन, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो एक ब्लॉक में सारे डिटेल्स इंक्लूड रहते हैं, लाइक टाइम स्पेंड, किस पूल से हुआ है, किस माइनर ने किया है, द एड्रेस ऑफ माइनर, एवरीथिंग, राइट। आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। सो लाइक यू कैन, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि तुम अपना बिटकॉइन एक्सेस कर सकते हो विद योर प्राइवेट की। इफ यू लूज योर प्राइवेट की, you lose your BTC. And there is concept of private key, public key, and digital signature. So why the digital signature is important in Bitcoin blockchain or any blockchain, and how it's like better than like traditional signature. I will explain one by one. Okay, you can see my screen. हाँ भैया। Okay, so this is private key. Private key एक particular user के लिए private रहता है, means you don't need to like expose your private key. So the private key is the like the very valuable key. Like what is the private key? So private key कोई भी एक random number होता है, like any big random number of like 256 bit, 512 bit. So you can like just you can take only one or two anything. So again you will like find your public key. तो ये जो प्राइवेट की टू पब्लिक की आते हैं, ये एक एल्गोरिदम होता है, इलेक्ट्रिकल कर्व डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम, ECDSA। सो इसके पीछे एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि प्राइवेट की एक बहुत ही बिग लाइक बहुत ही बड़ा वैल्यू होता है, जिसको गेस करना बहुत ही लाइक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। So let's say this is your private key. So let's say I'm Anand and this is my private key and this is my public key. Okay, public key is for public key. Anyone can know your public key or you can expose your public key. But you you never expose your private key. And if anyone have your public key, then never be find your private key, because ये जो है ये one way function होता है। If you have private key, you can calculate your public key, but you have public key, you never calculate your private key. That's why it's secure. So this is one way function only. What is the digital signature? So yeah, so let's say this is a message Alice to Bob. Let's say you broadcast your transaction and you want to send some your BTC to your friend. So let's say you are a Alice and you transfer some BTC to Bob. So ये सेंडर का प्राइवेट की होता है, मीन्स यू डोंट नो द प्राइवेट की ऑफ रिसीवर, यू नो योर प्राइवेट की योर ओन। तो जो भी हम सिग्नेचर साइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट की, योर प्राइवेट की, राइट। आई टेम्पर माई प्राइवेट की, लेट मी टेक फ्रॉम यू। ओके, ओके, सो लेट्स से आई एम एलिस और माई फ्रेंड इज बॉब। तो एलिस, ये जो प्राइवेट की होगा ये एलिस का होगा, बिकॉज एलिस बॉब का प्राइवेट की नहीं जानता। एंड दिस इज द मैसेज, you can write any message and you can just calculate your signature. So this is your message signature. This is hex value of 256 bit. तो अगर तुम किसी को भी ये मैसेज सिग्नेचर देते हो, anyone can verify is this signature is authentic or not, or is this signature belongs to your address or not. How can we verify signature? तो या सो सिग्नेचर वेरीफाई करने के लिए लेट्स द मैसेज, जो पहले हमने मैसेज लिया था, एंड दिस इज द पब्लिक। आई एम नॉट ऑनर, मैं ऑनर नहीं हूँ।
अभी एक मीट चल रही है। ओके, तो किसी भी सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए हमें उस यूज़र का पब्लिक की पता होना चाहिए, बिकॉज पब्लिक की इज़ अवेलेबल फॉर एवरीवन, एंड here is the signature of this message, and you can just click on the verification. If you change anything in message, let's I change from Alice to Bob to like just appending some dot, so this signification is not going to verify, and this is red in block. It means the signature is not authentic or something is tampered with data. So अगर मैं सिग्नेचर में भी जस्ट लिटिल बिट अगर मैं चेंज करता हूँ लाइक 9 to 6, तो अगर मैं वेरीफाई पे क्लिक किया इट मीन्स अगेन इट्स नॉट वेरीफाइड. सो ऐसा होता है कि अगर कुछ भी डेटा मैसेज में टैम्पर्ड हुआ या फिर सिग्नेचर में तो ये वेरीफाई नहीं होता. तो दिस इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस इन द ब्लॉकचेन. तो कोई भी यूजर लेट्स से एलिस बॉब को कुछ मैसेज ट्रांसफर करना चाहता है, सॉरी बीटीसी, तो वो एक मैसेज लिख के और अपने प्राइवेट की से उस ट्रांजेक्शन को साइन करेगा और वो ब्रॉडकास्ट करेगा, और जो माइनर है उस ट्रांजेक्शन को पिकअप करेंगे और उस सिग्नेचर्स को पहले वेरीफाई करेंगे कि ये जो सिग्नेचर है इज रिलेटेड टू एलिस और नॉट. तो एलिस के पब्लिक की से ये वेरीफाइड हो जाएगा कि या दिस सिग्नेचर इज बिलोंग्स टू एलिस, तब ये जाके ब्लॉक में अपेंड होता है. अगर कोई भी अटैकर आके कुछ भी डेटा चेंज होता है तो ये सिग्नेचर वेरीफाई नहीं होगा एंड देयर ट्रांजेक्शन विल बी डिस्कार्डेड, और उसका बीटीसी फिर उसके एड्रेस पे स्टोर रहेगा. राइट, दिस इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस. उज्जवल, गॉट इट? यस यस। Okay, let's take the transaction. What is exactly transaction in Bitcoin? Okay, so मैंने जो उस समय लाइक ब्लॉक में बताया था कि एलिस टू बॉब, और मैंने माइन किया था एंड आई ट्राई टू फाइंड सम नॉन्स वैल्यू, वो एक डेमो था. बट रियल में कुछ ऐसा होता है. मैसेज मीन्स द वैल्यू ऑफ बिटकॉइन दैट यू वांट टू ट्रांसफर to your friend, and from means sender, means you have some BTC and you need to transfer some BTC from your account to your friend accounts. तो यहाँ पे कुछ नेम मेंशन नहीं होता. यहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारा पब्लिक एड्रेस और इसका पब्लिक एड्रेस होता है एंड योर प्राइवेट की. ये प्राइवेट की होता है मैसेज को साइन करने के लिए, राइट. तो जस्ट साइन योर मैसेज यूजिंग द ECDSA क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम, इलेक्ट्रिकल कर्व डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम. तो ये मैसेज साइन हो गया, और जो माइनर होगा इस सिग्नेचर को पिकअप करेगा और तुम्हारा जो ये जो लाइक ये जो पब्लिक की है इसे पिक करेगा, और इन दोनों के हेल्प से पता कर देगा कि इस सिग्नेचर में कुछ टैम्पर्ड तो नहीं हुआ है, एंड इफ योर सिग्नेचर विल वेरीफाई तो वो ब्लॉक्स में अपेंड कर देगा एंड जस्ट माइंड योर ब्लॉक्स. ये देखो ये एग्जैक्टली ब्लॉकचेन है, कैसे वर्क करता है, राइट. ये देखो ये एक्चुअल ब्लॉकचेन है. लाइक यहाँ पे देखो मैं ब्लॉक टू डिस्कस करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लो. लाइक ये ब्लॉक टू है. अभी क्या है, एवरी ब्लॉक हैज ऑलरेडी माइंड. ओके, द दैट्स व्हाई द लाइक ब्लॉक्स आर ग्रीन जस्ट फॉर विजुअल. ओके, ओके, ये ट्रांजैक्शन है लाइक वैल्यू, और ये फ्रॉम दिस एड्रेस टू दिस एड्रेस, राइट. और ये कई तरह के ट्रांजैक्शन लाइक ट्रांजैक्शन 1, ट्रांजैक्शन 2, ट्रांजैक्शन 3 एंड ट्रांजैक्शन 4. तो ट्रांजैक्शन 2 फ्रॉम दिस एड्रेस टू दिस एड्रेस, फ्रॉम दिस एड्रेस टू दिस एड्रेस, सब में एड्रेस डिफरेंट डिफरेंट है. एंड हेयर इज द सिग्नेचर ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन. तो हर एक ट्रांजैक्शन का सिग्नेचर ब्लॉक्स में अपेंड होता है. तो माइनर्स का काम होता है ये सब ट्रांजैक्शन को इसमें अपडेट करके, और हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक का इसमें अपडेट करके, और हैश ऑफ करंट ब्लॉक माइन करना. तो लेट्स से मैंने एक चेंज कर दिया जस्ट 10 बिटकॉइन टू 11 बिटकॉइन. मीन्स अब देखो क्या होगा कि ये जो एड्रेस है अब ये 11 बिटकॉइन ट्रांसफर करना चाहता है अपने फ्रेंड को. So you see the signature of this transaction is still unverified, means color in red. तो अगर किसी अटैकर ने माइन कर भी दिया है इस ब्लॉक को, लेट्स somehow they found the nonce value of this block to just get with leading zero.
of this hash. तो अभी ये माइन हो रहा है। ओके, अब ये माइन हो गया, लाइक तो ये ब्लॉक माइन हो गया। द नॉन्स वैल्यू इज 33546। लेकिन द सिग्नेचर ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इज स्टिल अनवेरीफाइड। मीन्स अगर कोई ब्लॉक अपेंड भी हो जाता है नेटवर्क में, तो अदर नोड्स तुरंत वेरीफाई कर लेंगे कि समथिंग इज टैम्पर विद दिस ब्लॉक, और वो डिस्कार्ड कर देंगे नेटवर्क से, राइट। कुछ विल जस्ट गिव मी 2 मिनट, माई बैटरी इज रनिंग आउट। गाइस जस्ट गिव मी 10 सेकेंड। ओके, मैं ब्लॉकचेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद द सिग्नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके सर, तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि जो सिग्नेचर स्टिल अनवेरिफाइड है, मीन्स कोई भी अटैकर अगर छोटा सा डेटा या फिर ट्रांजैक्शन पर कुछ भी चेंजेस करता है, तो इट्स लाइक कंप्लीटली विजिबल कि कहाँ पे वो चेंजेस हुए हैं। तो दिस इज द लाइक बिटकॉइन ब्लॉकचेन, एंड दैट्स व्हाई द बिटकॉइन ब्लॉकचेन इज मच मच सिक्योर। तो अभी क्या होगा कि अगर कुछ भी चेंज हुआ, एक तो ये सिग्नेचर अनवेरिफाइड है और उसके बाद के ब्लॉक सारे अनवेरिफाइड हो जाते हैं। तो ये वेरिफिकेशन पता चल जाता है। एंड पीयर टू हैव ऑल्सो द लेजर ऑफ सेम डेटा। सो पीयर टू और पीयर थ्री के पास अगर सेम डेटा है, देन पीयर लाइक पीयर ए नो या समथिंग इज हैपन विद माई डेटा, सो वो तुरंत वो इसे अपडेट कर देगा, राइट। गॉट इट टिल हेयर? Yes, we are. Okay, is there any question, Ujjwal, Sasan, or any in the participant? Okay, so I already covered the SHU 256 hash function, the hash rate, block, private key, public key, digital signature, and the blockchain, and the mining also. So minings means माइनर्स को वो नॉन्स वैल्यू पता करने होते हैं, जिससे जो ब्लॉक का जो हैश है उसके लीडिंग में सम जीरोज हो। दिस इज कॉल्ड माइनिंग। Okay, and the set of private key, public key is wallet. I will discuss later what is halving. Okay. Okay. डबल स्पिन भी डिस्कस करना था भैया। हाँ, ओके ओके, वो बच्चे ओके। हाँ, ओके जस्ट thanks sir. Okay, am I audible? Or no, why? Yeah.
Am I audible as well? Yes, we are. Okay. Something issue with my Wi-Fi. I don't know why. Okay. Uh, ये ब्लॉक का लाइक दिस इज ब्लॉकचेन लेजर ऑफ लाइक blocks and it's connected with previous hash value. So can you see my screen? सिर्फ 2 एरोस दिखे हैं। Okay, okay, wait. Okay, okay, no. हाँ, अब सही है, दिख रहा है। Okay, okay, ठीक है. ओके ठीक है. ये जो स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज ब्लॉक्स एंड ब्लॉकचेन. सो जस्ट या एंड दिस इज द बिटकॉइन ब्लॉकचेन लेजर जहाँ पे ट्रांजैक्शन. सो ये सिर्फ डेमो के लिए है, बट इन रियल लाइफ द ट्रांजैक्शन इज स्टोर्ड विद देयर सिग्नेचर. Okay, and many of things also included. I will explain one by one. And yeah, this is the architecture to compute your public address and the signature. So you have some message and you have some private key. Using both private key and message, you can calculate signature. You can sign function with some cryptographic algorithm. And here in the Bitcoin is used ECDSA cryptographic signature algorithm. And if you have signature with the help of public key, you can verify signature with message. So anyone can just take your public key signature in the message, and it's verify whether your signature is verify authentic or not, or is any data is tampered with your signature, and this is accept or reject. So माइनर का काम यही होता है कि सिग्नेचर वेरीफाई करना. इफ सिग्नेचर इज वेरीफाइड तो वो ब्लॉक में अपेंड करता है डेटा को. How the transaction stored in the Bitcoin blockchain? So there is a like thousand of transaction stored in one block. तो बेसिकली क्या होता है कि अभी तो हमने सिग्नेचर को वेरीफाई कर लिया कि जो मैसेज है और सेंडर का जो पब्लिक की है उसके साथ कुछ टैम्पर्ड हुआ है कि नहीं. अगर टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन है, अगर उसमें कुछ टैम्पर्ड होता है तो उसके लिए वी लाइक बिटकॉइन यूज वन डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मर्कल ट्री. मर्कल ट्री में कैसा होता है कि लेट्स से देयर इज वन ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन 2, ट्रांजैक्शन 3 एंड ट्रांजैक्शन 4 on the bottom, and we just took the hash of these two transactions and the hash of these two transactions and again hash of hash, and just we calculate the top hash. This is called Merkle root tree. सो अगर कहीं भी लीफ नोड में कहीं भी अगर टेम्पर होता है ट्रांजेक्शन मीन्स वो कंटिन्यू होता जाता है, एंड वी कैन ट्रैक इन विच ब्रांच में और किस नोड में लीफ में वो ट्रांजेक्शन टेम्पर्ड हुआ है. तो दिस इज कॉल्ड द मर्कल रूट. एक ब्लॉक्स में सेट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, मर्कल रूट, टाइम स्पेंड एंड और भी चीज़ें होते हैं. आई विल डिस्कस एवरीथिंग लेटर हाउ इट्स वर्क. सो यहाँ पे देखो सही से, लाइक दिस इज ब्लॉक 10, ब्लॉक 11 एंड ब्लॉक 12. एक ब्लॉक 10 में ईच ब्लॉक हैज कंटेन प्रीवियस हैज द टाइम स्पेंड, वो कब माइन हुआ है. मीन्स इन द टाइमिंग ऑफ माइनिंग में क्या होता है कि टाइम स्पेंड भी पर सेकेंड चेंज होता है. डेट्स वाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ पर्टिकुलर हैज. हर सेकेंड में टाइम स्पेंड भी चेंज होता है एंड इट्स क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी फॉर माइनर्स. Transaction root, this is the root of Merkle root, hash of transaction, and this is the nonce. तो ट्रांजेक्शन रूट में क्या होता है कि दिस इज द लीफ मतलब बेसिक ट्रांजेक्शन है जो यूजर्स के हैं, और दिस इज द हैश ऑफ दिस ट्रांजेक्शन एंड अगेन हैश ऑफ दिस टू हैशेस. तो ये हैश रूट होता है. दिस इज कॉल्ड हैश रूट, मर्कल रूट हैश ट्री. माइनिंग पूल, व्हाट इज पूल? एंड सो लेट्स से इन द बॉटम लाइक सारे कंट्री से ट्रांजेक्शन ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, राइट. तो सम
transaction is picked by pool 1, some transaction is picked by pool 2, and some transaction is picked by pool 3. And a pool contain lot of miners, like a company hai. Let's say assume the pool 1 to pool 3 is company 1, company 2, and company 3. So because the Bitcoin blockchain is decentralized, so they have a lot of nodes. So this is called node 1, node 2, node 3, and each node contain a like more than 50 or 60 miners. और ऐसा होता है बिकॉज द करंट डिफिकल्टी ऑफ बिटकॉइन इज ट्रिलियन हैश पर सेकेंड. सो 1 ट्रिलियन हैश पर सेकेंड में हमें ब्रूट फोर्स करना पड़ता है. तो ये सभी जो ये ऑल माइनर्स आर डिवाइडेड देयर वर्क्स एंड रन पैरेलली. लाइक उनके जो कंप्यूटर्स होते हैं पैरेलली रन करते हैं. लाइक 1 टू द पावर 12 में ये नॉन्स के साथ हैश कोड फाइंड आउट करना है, और टू द पावर 26 से टू द पावर 52 तक कोई दूसरा माइनर उस पर वर्क कर रहा है. तो दिस इज कॉल्ड माइनिंग. और माइनर्स का काम होता है वो नॉन्स फाइंड आउट करना, जिससे ब्लॉक का जो हैश है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम हो, मतलब विद लीडिंग सम जीरो. Okay, this is the most important point in Bitcoin UTXO model, unspent transaction output. बेसिकली क्या होता है कि अभी हमारे अकाउंट्स में क्या होता है कि लेट्स से जितने फ्रेंड्स ने भी हमें INR भेजा होता है, एक सम अप होकर एक फाइनल हमें वैल्यू मिलता है, राइट उज्जवल? यस भैया। ओके, बट BTC के केस में ऐसा होता है, बिटकॉइन के केस में ऐसा होता है कि लाइक इफ लाइक you got 2 BTC from like Ujjwal got some BTC from me. Like मैंने उज्जवल को सेंड किया BTC 5 BTC, तो उसका एक अलग डेटा बनता है. और अगर मयंक ने लाइक उज्जवल को फिर से 5 BTC सेंड किया, मीन्स उसका एक अलग डेटा बनता है. मतलब बिटकॉइन के केस में वैल्यू सम अप होके फाइनल वैल्यू नहीं आता, वो अलग अलग ही स्टोर रहता है. लेट्स सी हियर. सो किसी अनदर पर्सन ने लेट्स से #66 ने इसे 1 BTC भेजा, और #74 ने इसे 0.57 BTC भेजा, और #32 ने इसे 0.5 BTC सेंड किए. तो इसके पास टोटल 2.25 BTC है, बट ये अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर होते हैं. लाइक अगर इसे ट्रांसफ़र करना है 1.5 BTC, मीन्स they he cannot transfer this BTC because this is only 1 BTC. They also cannot transfer the 0.75 BTC क्योंकि उसके 1.5 BTC ट्रांसफर करना है. तो ऐसा होता है कि इसे लाइक इन दोनों जो अनस्पेंड ट्रांजैक्शन है, लाइक ट्रांजैक्शन 1 है, ट्रांजैक्शन 2 है, ट्रांजैक्शन 3 है, तो इस केस में इस दो ट्रांजैक्शन को इंक्लूड किया जाता है. तो ये दोनों मिलकर होते हैं 1.75 BTC. तो ऐसा होता है कि माइनर इस दोनों ट्रांजैक्शन को पिक करता है एंड 1.5 BTC इसे दे के जो रिमेनिंग 0.25 BTC है वो अगेन इसे ट्रांसफर कर देता है. यू गॉट इट? व्हाट इज UTXO and how is different from traditional bank account? Or is there any doubt in UTXO model? Or should I explain again? ओके, बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारा लेट्स से अभी हमारा ट्रेडिशनल बैंक होता, तो हमारा जो टोटल बैलेंस हो जाता 2.25 BTC, और अगर हमें 1.5 BTC सेंड करना होता तो जस्ट हमारा 1.5 BTC डिडक्ट होता और उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता. बट इस केस में ऐसा नहीं होता है. बिटकॉइन के केस में ऐसा होता है कि वो चेक करता है कि उसका एक ट्रांजेक्शन मोर देन 1.5 BTC है या नहीं है. तो माइनर चेक करेगा इसका ट्रांजेक्शन 1, ट्रांजेक्शन 2, ट्रांजेक्शन 3. अगर अलग अलग फ्रेंड से उसे BTC मिला है तो वो अलग अलग ट्रांजेक्शन बनता है, वो सम अप नहीं होता. तो वो चेक करेगा कि या दिस ट्रांजेक्शन लाइक इस ट्रांजेक्शन में 1 BTC है और सेकंड ट्रांजेक्शन में 0.75 BTC है. तो अगर तुम्हें 1.5 BTC किसी फ्रेंड को सेंड करना है तो माइनर ये दोनों ट्रांजेक्शन को पिक करेगा और इसे 1.5 BTC सेंड करके जो रिमेनिंग अमाउंट है 0.25 BTC अगेन दूसरे ब्लॉक में उसे ट्रांसफर कर देगा. व्हाट इट?
ओके, मतलब नॉर्मली बैंक की तरह इसमें ट्रांसफ़र नहीं होता, इसलिए इसे कहते हैं अनस्पेंट ट्रांजैक्शन आउटपुट। जो भी अनस्पेंट होता है वो फिर से उसे रेवेन्यू मिल जाता है। एंड जैसे कि लाइक जैसे कि आईएनआर में द स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, पैसा होता है। तो संतोष, या तो बिटकॉइन के केस में क्या होता है, तो देर आर 10⁹ संतोषी इन वन बिटकॉइन, राइट। सो मतलब तुम लाइक बीटीसी नहीं, यू कैन ऑल्सो ट्रांसफर सम संतोषी टू योर फ्रेंड्स। Yeah, this is how the key wallet and address work. So let's say you have some private key, random number of 256 bit. So using ECDSA curve, you can create your public key as I discussed earlier, and this is called double hash, SHA-256 and RIP-EMD. There are two different cryptographic algorithms, or using this continuous algorithm, you will get public key hash. And base 58 is checked for is your public Bitcoin address is right or wrong. So after checking base 58, you got the Bitcoin address. So this is your private key. This is private, completely private. You don't need to expose, but the public address is publicly available. And if you want to send any BTC to a friend, you just ask for public address of your friend, not the private key. And you cannot go a step back even from Bitcoin address to public key hash. This is completely one way hash function. Got it? Let's deep dive into real data in Bitcoin. Okay. Can you see my screen? यस This is सर। screen. Okay. So this is the real data of entire blockchain ledger Bitcoin का। तो अभी तक में 7.9 lakh blocks mine हो चुके हैं, राइट। एंड दिस ब्लॉक हैज जस्ट माइंड 11 मिनट अगो, मतलब जस्ट ये माइन हुआ है। और देर इज 4 और 5 ब्लॉक्स, मीन्स मल्टीपल नोड पैरेलली सम ब्लॉक माइन कर रहे हैं, और वेरिफिकेशन के बाद ओनली वन ब्लॉक्स कैन वेरीफाइड एंड अपेंड इनटू द एग्जिस्टिंग ब्लॉक, एग्जिस्टिंग लाइक। एंड ये जो ब्लॉक्स है वो लीनियर वे में अपेंड होता है, देर इज नो एनी अदर ब्रांच। अगर कोई ब्रांच भी होता है देन आफ्टर सम टाइम इट डिस्कार्डेड एंड गो टू द मेमपूल। सो मेमपूल क्या है? ओके, लेट्स ओपन एनी वन ब्लॉक। कौन सा ओपन करूँ, लेटेस्ट वाला या फिर सेकंड लेटेस्ट? लाइक ये ओपन करते हैं जो जस्ट 11 मिनट एगो पहले माइन हुआ है। देखो, दिस ब्लॉक कंटेन हैश। आई ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज हैश। ये हैश है करंट ब्लॉक का। दिस ब्लॉक ऑल्सो कंटेन टाइम स्पेंड, किस टाइम स्पेंड पे ये माइन हुआ है, मीन जस्ट 15:45 पे 12 मिनट अगो। Size, what is the size of total transaction that involved in this block? Weight, weight है 3.99 mmu। वेट एक्चुअली वो एक वर्चुअल वेट होता है बिट्स का। ओके। एंड फ्री स्पैन होता है लाइक रेंज ऑफ ट्रांजेक्शन फी इंक्लूडिंग ब्लॉक। तो ये एक होता है, एक वर्चुअल कैलकुलेट करते हैं कि संतोषी पर वर्चुअल वाइट, मीन्स पर बाइट का कितना संतोषी चार्जेस लगा, एक वर्चुअल कैलकुलेशन, दिस इज नॉट अ रियल कैलकुलेशन। मीडियन फी होता है, इट प्रोवाइड लाइक एवरेज एस्टिमेटेड ऑफ फी पेड फॉर द ट्रांजेक्शन इन द ब्लॉक, मीन्स लाइक ये जो फी है कि एवरेज कितना संतोषी पे करना पड़ रहा है पर बाइट ट्रांजैक्शन के लिए, दिस इज $3.313 नाउ। टोटल फीस ऐसा होता है कि लाइक जब भी तुम कोई बीटीसी ट्रांसफ़र करोगे तो तुम्हें ट्रांजैक्शन फ़ी देना पड़ता है माइनर को। सो अगर तुम जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन फ़ी माइनर को दोगे, माइनर विल पिक योर ट्रांजैक्शन अर्लियर एंड माइन इन ब्लॉक। तो ये डिपेंड करता है कि बिकॉज माइनर भी द द एम ऑफ माइनर इज लाइक माइन द ब्लॉक ऑफ बिटकॉइन। सो उसे माइनर को भी कुछ फी चाहिए होता है, तो दैट्स वाई द यूज़र जो होता है वो माइनर को फीस देता है। एंड दिस इज द सब्सिडी, मीन्स एक लाइक मैंने बोला था हाउ द बीटीसी क्रिएटेड इन नेटवर्क।
तो न्यू बीटीसी कैसे होता है और बीटीसी सप्लाई में कैसे आ रहा है, द करेंटली अभी 18 मिलियन सप्लाई में है। तो ऐसा होता है कि जब भी कोई एक माइनर एक ब्लॉक माइन करता है तो नेटवर्क की तरफ से उसे अवार्ड मिलता है कुछ 6.25 बीटीसी, करंट में इतना चल रहा है। और हर 4 ईयर के बाद ये जो रिवॉर्ड है ये हाफ होते जाता है, दिस इज कॉल्ड हाल्विंग। तो ऐसा होता है कि हर 4 ईयर के बाद अभी 6.25 बीटीसी मिल रहा है, फिर 2024 के बाद 3.25 बीटीसी रिवॉर्ड मिलेगा। दिस इज द टोटल फी फॉर माइनर। तो अभी $193 टोटल अमाउंट है। ये माइनर है, मीन्स ब्रेन पूल, मीन्स एक कंपनी ब्रेन पूल, उस कंपनी ने इसे माइन किया है। लेट्स डीप डाइव इन द ट्रांजैक्शन। ये देखो, मैंने कहा था एज यू से दिस इज द एड्रेस ऑफ सेंडर, दिस इज द एड्रेस ऑफ रिसीवर। और ये देखो ये एड्रेस, द यहाँ पे देखो ये एड्रेस एंड ये एड्रेस सेम है, मीन्स जो कुछ बीटीसी से ट्रांसफ़र करने थे उसके बाद जो बचा है अगेन इसी अकाउंट में आया है यूटीएक्सओ मॉडल, राइट। ये ऐसा नहीं है कि छोटा सा अमाउंट कटेगा और ट्रांसफ़र हो गया। एक्चुअली ये ट्रांजेक्शन पिक करता है माइनर, और जितने ट्रांसफ़र करने होते हैं उसके बाद जो भी रिमेन बच जाते हैं बीटीसी अगेन सेंडर को भेज दिया जाता है। एंड दिस इज द ट्रांजेक्शन हैज़ फॉर दिस ट्रांजेक्शन व्हाट इट उज्जवल, क्या क्या डेटा रहते हैं। बहुत बढ़िया। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड कॉइन बेस। कॉइन बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी कोई माइनर माइन करता है तो एक कॉइन बेस ट्रांजेक्शन होता है। तो जो भी रिवॉर्ड मिलते हैं कॉइन बेस में मिलते हैं। यहाँ पे देखो 7.163 बीटीसी ये रिवॉर्ड है, 6.25 रिवॉर्ड है और प्लस सम जो रेस्ट पार्ट है वो ट्रांजेक्शन फ़ी है। मतलब टोटल ट्रांजेक्शन फ़ी जो इस ब्लॉक में, और इस ब्लॉक में 3402 ट्रांजेक्शन अपेंड है, मीन्स ईच ब्लॉक कंटेंट थाउजेंड ऑफ ट्रांजेक्शन, और हर ट्रांजेक्शन का फी है उसको सम अप करके, एंड जो रिवॉर्ड है 6.25 बीटीसी उसको सम अप करके टोटल 7.16 बीटीसी माइनर को मिला है। एंड व्हाट इज द करेंट वैल्यू ऑफ बीटीसी, वन बीटीसी अप्रॉक्स 40 to 50 लाख। तो अभी लगभग 7 बिटकॉइन का देख लो तो कितना प्राइस हो जाएगा, लाइक 35 लाख हर 10 मिनट में, लाइक नॉट उज्जवल व्हाट इज द करेंट वैल्यू ऑफ बिटकॉइन राइट नाउ। 22 लाख का सर। 32 लाख। तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ 7 बिटकॉइन। 22 था भैया, तो 150 के अराउंड होगा। करोड़, मीन्स लेट्स से 210 लाख, राइट। तो हर 10 मिनट में कंपनी को इतना बेनिफिट होता है। डेट्स वाई माइनर जो होते हैं वो नेटवर्क में आते हैं माइन करने के लिए ब्लॉक। बट इट स्टिल, इसका जो एनर्जी होता है बहुत ही एनर्जी कंज्यूम करता है। तो लाइक आई विल एक्सप्लेन हाउ मच एनर्जी बिटकॉइन कंज्यूम एवरी ब्लॉक। तो ये जो रिवॉर्ड मिलता है वो माइनर का एड्रेस होता है, दिस इज द एड्रेस ऑफ माइनर जो इसे माइन कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड कॉइन बेस्ड ट्रांजेक्शन। तो हर एक ब्लॉक में जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन होता है कॉइन बेस्ड ट्रांजेक्शन होता है, और उसके बाद सारा ट्रांजेक्शन इसमें अपेंड किया जाता है जिस भी यूजर ने ट्रांजेक्शन किया है। ये ब्लॉक्स है, राइट। ओके, ओके, अभी तक कोई क्वेश्चन। नहीं भैया। ओके, दिस इज द एच डी वॉलेट। ऐसा होता है कि लाइक वॉलेट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड योर मास्टर प्राइवेट की। तो अभी जो हमने देखा था मास्टर प्राइवेट की से लाइक पब्लिक की कैलकुलेट करते हैं यूजिंग ईसीसी, एंड अगेन हैश करते हैं तो पब्लिक की एड्रेस वन मिलता है। बट यू नीड मल्टीपल एड्रेस, अगर तुम्हें ज़्यादा एड्रेस चाहिए तो क्या करते हैं, जस्ट प्राइवेट की में +1 करते हैं तो डिफरेंट हैश वैल्यू मिलता है, उस प्राइवेट की का यूज़ करके पब्लिक की बनाते हैं। तो अगर कोई भी एक एड्रेस लॉस होता है तो मास्टर प्राइवेट की के थ्रू तुम सारे पब्लिक एड्रेस रिकवर कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड हायरार्किकल डिटर्मिनिस्टिक वॉलेट। ओके, बिटकॉइन माइनिंग डिफिकल्टी। तो ये ग्राफ है, ये डिफिकल्टी शो कर रहा है ट्रिलियन हैश पर सेकेंड में। तो अभी कितना, 33 ट्रिलियन हैश पर सेकेंड, नॉट 33, जस्ट लाइक 38। तो 38 ट्रिलियन पर हैश पर सेकेंड का मतलब है कि एक ब्लॉक को माइन करने के लिए 38 ट्रिलियन हैश पर सेकेंड कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसके लिए लगभग
10,000 कंप्यूटर लगते हैं, नॉट जीपीयू, जो जीपीयू से भी पावरफुल कंप्यूटर वो सब यूज़ करते हैं इतने हैश, मतलब ब्रूट फोर्स करने के लिए। तो अगर एक ब्लॉक को माइन करने पे अगर लेट्स से कि थ्री लाइक 7.05 जो भी हमें रिवॉर्ड मिल रहे हैं, जिसका वैल्यू है 210 लाख, तो उसमें से अप्रॉक्स 150 लाख का एनर्जी लाइक कंज्यूम करता है एक ब्लॉक माइन करने में। एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट डिफिकल्टी, तो जो भी नेक्स्ट डिफिकल्टी होता है ब्लॉक का, प्रीवियस डिफिकल्टी इंटू 2016 इंटू 10 मिनट एवरेज टाइम है ब्लॉक माइन होने का, डिवाइड बाई टाइम टू माइन लास्ट 2016 ब्लॉक। मीन्स एवरी 2016 ब्लॉक के बाद जो बिटकॉइन का डिफिकल्टी है वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, डिपेंड करता है कि प्रीवियस डिफिकल्टी कैसा था। लेट से प्रीवियस ब्लॉक्स की डिफिकल्टी कम होगी तो इस बार डिफिकल्टी बढ़ जाएगी, और उसके बाद अगेन डिफिकल्टी कम हो जाएगी, बिकॉज इसे मैनेज करना पड़ता है कि जो ब्लॉक माइनिंग का जो ड्यूरेशन है वो 10 मिनट रहे। या दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट मैकेनिज्म प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म, इसी के थ्रू बिटकॉइन ब्लॉकचेन कंप्लीटली सिक्योर है। सो ये जो बिटकॉइन प्रोटोकॉल में ये जो मैकेनिज्म है यही डिफाइन करता है कि कैसे माइन करना है। बेसिकली जो हम माइन करते हैं, माइनर नीड टू शो हाउ मच डिड दे वर्क, दिस इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ वर्क। जो भी उसने वर्क किया है, जो भी उसने पोटेंशियल लगाया नॉन्स वैल्यू फाइंड आउट करने में, तो वो नॉन्स जब फाइंड आउट होता है तो वो प्रूफ होता है कि ये ब्लॉक अब माइन हो चुका है। दिस इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म। The proof of work mechanism used by Bitcoin blockchain to validate transaction and add new block to the chain. तो जब भी हमें कोई न्यू ब्लॉक वैलिडेट करना पड़ता है, फिर माइन करना पड़ता है, तो उसके लिए जो नॉन्स फाइंड आउट करना पड़ता है, दिस इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ वर्क। नाम से ही पता चल रहा है कि जो काम है उसका प्रूफ है। और ये जो है ना, माइनर्स रिक्वायर माइनर्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ये जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम होता है, नथिंग, जस्ट वो जो हैश वैल्यू होता है वो फाइंड आउट करना पड़ता है, यही सबसे कॉम्प्लेक्स है। देयर इज नो एनी इक्वेशन ऑफ फॉर्मूला टू फाइंड नॉन्स, ओनली हमें ब्रूट फोर्स ही करना पड़ता है। The difficulty of this mathematical problem is adjusted regularly to ensure that new blocks are added to chain at a consistent rate. अगर डिफिकल्टी बहुत कम हो जाएगा, मीन्स माइन करना इजी हो जाएगा, तो जो जो माइन करने का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि फिर से सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से डिमांड कम हो सकता है। तो इसी को देखते हुए जिन्होंने भी ये प्रोटोकॉल बनाया था वो इसी हिसाब से ब्लॉक की डिफ़िकल्टी एडजस्ट हो जाती है। अगर पहले डिफ़िकल्टी कम थी तो डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगी, और डिफ़िकल्टी अगर ज़्यादा थी तो अगेन कम हो जाएगी। The proof of work is designed to be decentralized system with miners completely to solve the mathematical problem and add new block to the chain. जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है वो बेसिकली मैथमेटिकल प्रॉब्लम का सॉल्व करने का मतलब है यू नीड टू फाइंड अ पर्टिकुलर हैश, सो यू नीड टू फाइंड अ नॉन्स वैल्यू, वही नॉन्स वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है। प्रूफ ऑफ वर्क में काम यही है कि नॉन्स वैल्यू पता करना। द एनर्जी कंजप्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रूफ ऑफ वर्क हैज़ बीन अ टॉपिक ऑफ डिबेट। ये इतना एनर्जी लेता है जैसे एक पूरी सिटी जितना कंज्यूम करती है एनर्जी, वो उतना एनर्जी सिर्फ एक ब्लॉक माइन होने में कंज्यूम होता है। So this is not a good again for environment. Proof of work has successful in maintaining the security and integrity of the Bitcoin blockchain, but it is not without its limitation and drawback. तो ऐसा है कि वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर है और डिसेंट्रलाइज ऑफ बिटकॉइन ही है, बिकॉज इट यूज पब्लिक लेजर प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम। इसमें ऐसा होता है कि एनी नोड कैन पार्टिसिपेट एंड पार्टिसिपेटिंग इन माइनिंग टू माइन द ब्लॉक, देर इज़ नो एनी रिस्ट्रिक्शन। तो इसलिए भी ये एल्गोरिदम इतना डिफ़िकल्ट बनाया गया है कि कोई अटैकर इजीली अटैक ना कर दे, उसी के सिक्योरिटी के लिए। ये है टोटल बिटकॉइन सप्लाई ग्राफ। 2009 में इसकी मतलब जो सप्लाई थी ज़ीरो थी, ओके, और ये मिलियंस में है। 2011 तक 5 मिलियन माइन हो चुका था, और अभी जो है 213 चल रहा है, और 13 में अभी अप्रॉक्स 18 और 19 मिलियन माइन हो चुका है। और अगेन नेक्स्ट 2039 में जाके ये कंप्लीट मीन्स 1 मिलियन होगा। मीन्स से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, जो माइनिंग का जो जो माइनिंग हो रही है ना वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है। मीन्स इसे कंप्लीट माइन होने में अभी 150 ईयर्स लग जाएंगे, ओनली 2 मिलियंस माइन होने में। अभी 19 मिलियंस सप्लाई में आ चुका है,
2 मिलियन सप्लाई में आने के लिए 150 ईयर्स लग जाएंगे नेक्स्ट। और अभी ओनली 10 ईयर्स में अप्रॉक्स 18 मिलियन माइन हो चुका है। तो ये क्या होता है, इसलिए इस तरह से सप्लाई मेंटेन रखती है। बिटकॉइन हाल्विंग चार्ट, हाल्विंग का मतलब यही होता है कि जो भी रिवॉर्ड मिल रहे हैं वो पर 4 ईयर के बाद वो हाफ हो जा रही है। तो इस वजह से सप्लाई धीरे धीरे कम हो रहा है इसका। ओके राइट, यू कैन सी उस समय जो थी इतना BTC मीन्स 22,000 लाइक इन द मिलियन में इतना BTC होता था। फिर अगेन 4 ईयर के बाद उसकी वैल्यू हाफ हो गई, फिर हाफ हो गई, फिर हाफ हो गई। अभी 6.25 BTC मिला रिवॉर्ड में माइनर को। ये माइनर ही सप्लाई में लाते हैं। फिर अगेन 2024 के बाद 3.25 BTC मिलेगा। इस तरह से इसका सप्लाई धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसे कंप्लीट माइन होने में इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। ये है, पर नोड के पास इतने हार्डवेयर रहते हैं टू स्टोर ऑल द लेजर ऑफ बिटकॉइन ब्लॉकचेन। तो ये बहुत बहुत ही एनर्जी कंजप्शन बहुत ही एक्सपेंसिव होता है नोड्स, मतलब जो भी माइन पूल मतलब माइनर होते हैं। तो एक कंपनी में इतने सारे लाइक हार्डवेयर में स्टोर रहते हैं सारे डेटा। ये बिटकॉइन प्राइस चार्ट है, मीन्स 2000 द सबसे लोएस्ट प्राइस था 2.85 INR 2010 में। जस्ट आफ्टर 11 ईयर्स इसका जो हाईएस्ट प्राइस गया था 56 लाख। इसलिए लोग इसमें पोटेंशियल देखते हैं एंड पीपल नाउ दिस डेज गोइंग टू इन्वेस्ट इन BTC। लाइक द मैनी पीपल लाइक BTC कंपेयर टू गोल्ड। जैसे गोल्ड लिमिटेड है इस नेचर में, वैसे बिटकॉइन लिमिटेड है 21 मिलियन, और इसे सप्लाई में आने में अभी बहुत टाइम लग जाएंगे। तो इसे गोल्ड से कंपेयर करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बिटकॉइन, यू कैन सेव देम और यू कैन स्पेंड जस्ट लाइक कैश। अभी क्या है कि अमेरिका में सिंपल UPI की तरह एक ट्रांजेक्शन होता है बिटकॉइन का, लाइक बहुत ही रियल लाइफ में आ चुका है। यू कैन ट्रेड और यू कैन इन्वेस्ट इन BTC बेस्ड कंपनी। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है? द मोस्ट एडवांटेज डिसेंट्रलाइज, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज, नो एनी सेंट्रल अथॉरिटी, मीन्स लाइक 24/7/365 द सर्वर विल रन प्रॉपरली। और डिसएडवांटेज क्या, वोलाटाइल है, बिकॉज यू सी हियर द प्राइस ऑफ बिटकॉइन लाइक इंक्रीज और डिक्रीज रैपिडली। इवन इन 1 ईयर इसका प्राइस 1/4 टाइम्स हो गया। And anonymity means this is like anonymous means very like transparent, secure, but never reveal your privacy like name or any data. Limited acceptance means ये widely used नहीं है because of not awareness। तो लोगों को पता भी नहीं है how to use Bitcoin। In the next session we will like see how you can interact with Bitcoin blockchain, how you can send some BTC to your friend, or how you can receive. I will go, we will explain hands-on experiment, how you can develop your Bitcoin wallet and all those things. Security, the most secure blockchain and irreversible transaction means अगर तुम्हारा ट्रांजेक्शन एक बार माइन हो गया, it never be update. Only you can add some new transaction, but you cannot replace or you cannot remove any transaction from any block. लो ट्रांजेक्शन फी, अभी ट्रांजेक्शन फी तो बहुत ज़्यादा हो गया ड्यू टू डिमांड, बट पहले बहुत कम ट्रांजेक्शन फी था। और विथ टाइम भी बहुत लाइक द मेन यूज ऑफ BTC टू क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। पहले बहुत टाइम लगता था बैंक टू बैंक क्रॉस बॉर्डर में, बट अभी जस्ट मिनटों में हो जाता है। एनर्जी कंजप्शन, ड्यू टू द प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म इट टेक लॉट ऑफ एनर्जी टू जस्ट माइन वन ब्लॉक। Accessibility, anyone can access Bitcoin blockchain. Lack of regulation itself in India में अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रेगुलेशन में नहीं आया है। तो मैनी कंट्री में ये भी रेगुलेट नहीं है, बट लाइक सैन फ्रांसिस्को वगैरह में ये रेगुलेशन में है, दुबई में। या एनी क्वेश्चन और एनी डाउट? या लाइक डबल स्पेंड डिस्कस करना रह गया। ओके ओके, डबल स्पेंडिंग। ओके, देखो ऐसा होता है डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम। देखो डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम मीन्स ये बिटकॉइन कैसे सॉल्व करता है। लाइक डबल स्पेंडिंग मीन्स यू स्पेंड योर मनी, योर वन मनी इन 2 टाइम्स। और ये कैसे बिटकॉइन में ये प्रिवेंट करता है, देखते हैं। क्या होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन होता है, लाइक एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन पब्लिक लेजर कॉल्ड ब्लॉकचेन, पहली बात। दूसरा क्या होता है, जो लेजर होता है चेन से कनेक्टेड होता है, दूसरी पॉइंट।
और तीसरा जो माइनर्स का काम होता है वो वैलिडेट करना कि कोई ट्रांजैक्शन 2 टाइम्स अपीयर तो नहीं हो गया, क्योंकि वो जो सिग्नेचर होता है लाइक वन एक सिग्नेचर अगर एक ब्लॉक में 2 जगह राइट है तो तुरंत पता चल जाता है कि ये सिग्नेचर 2 टाइम्स है, तो उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा ट्रांजैक्शन माइन हो गया है, बट इन केस ऑफ 6 ब्लॉक माइन होने के बाद ऐसा होता है कि इसमें वो चलता है 51% अटैक का केस। मतलब कि अगर कोई दूसरे नोड्स में लेट्स से कि तुमने अपना ट्रांजैक्शन ब्रॉडकास्ट किया और पूल ए ने, यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ, वेयर इज पूल ए, ओके, यहाँ देखो, यहाँ स्क्रीन दिख रहा है मेरा विजुअल। यस यस। ओके, जैसे देखो तुमने इंडिया से कहीं ट्रांजैक्शन ब्रॉडकास्ट किया, ओके, तो ये मेमपुल में आ गया। मेमपुल मीन्स पूल ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे तुम्हारे सब फ्लॉट हो रहे ट्रांजैक्शन, तो पुल ए ने तुम्हारा ट्रांजैक्शन भी पिक कर लिया और पुल टू ने भी तुम्हारा ट्रांजैक्शन पिक कर लिया ब्लॉक को माइन करने के लिए। तो लेट से पुल वन ने पहले माइन कर लिया, तो तुम्हारा जो ट्रांजैक्शन हो गया इस माइनर के ब्लॉक में आ गया। तो जैसे ही वो नेटवर्क में अपेंड हो जाएगा तो इसे पता चल जाएगा कि ये जो ट्रांजैक्शन है ऑलरेडी पुल ए ने माइन कर दिया, तो ये पुल जो है वो ब्लॉक में अपेंड नहीं करेगा। अगर वो जानबूझकर ऐसा करता भी है तो नेटवर्क उसे डिस्कार्ड कर देगा और उसे नेटवर्क से हटा देगा, और साथ में कुछ फाइन भी लगता है। मीन्स वो नेक्स्ट 30 डेज के लिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो इस तरह से डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम इसमें प्रिवेंट होता है बिटकॉइन के केस में। समझ गया? यस यस। ओके। ओके, नाउ इज देयर एनी क्वेश्चन और एनी डाउट? This presentation was not very technical, but everything explain करने के लिए win lot of time, तो जितना भी हो सका I tried my best कि explain कर सकूँ बिटकॉइन। Any question guys? Usual, have you any question or Sasank or any from the core member of BIB? Okay. नहीं And यार। definitely in the next session, we will have a expert from the Bitcoin Foundation. If you have any doubt, you can discuss with him, or we will also discuss the future and the future scope and the like career in the Bitcoin Foundation. If you are interested to like make your career in this blockchain field. Okay, if no one have no question, then uh, we will end this session. Okay, bye bye guys. See you soon in the next session. थैंक्स फॉर अटेंडिंग।